नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही एक खास मेहमान सैम पित्रोदा साहब। सैम पित्रोदा साहब को हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो एज अ साइंटिस्ट, एज समवन हु कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, इस रूप में देखते थे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी थे। वो इट वाज मेरे लिए इट वाज कॉन्सिक्वेंशियल, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एज अ साइंटिस्ट वी हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर सैम साहब। सैम साहब, आज जो देश में हो रहा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद कांग्रेस पार्टी, आज राहुल गांधी ने एक इस तरह की बात कही है जिससे प्रूव हो गया है कि जो देश का इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ बेईमानी नहीं कर रहा है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म करने में। मतलब राहुल गांधी इज नॉट टेलिंग, अपने मुंह से नहीं वो कह रहे हैं, पर इस कुछ तरह की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लोग वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनको अपरेंटली प्रोटेक्शन दे रहा है इलेक्शन कमीशन, बिकॉज उनके नाम नहीं रिवील कर रहा है, चीजें नहीं बता रहा है। मैं पहला रिएक्शन इस पे आपसे इसलिए करूंगा कि बिकॉज डेमोक्रेसी हम लोगों को, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण और हमारी जो सबसे खास चीज है वो हमारी डेमोक्रेसी है। दैट इज समथिंग विच मेक्स अस यूनिक, विच इज, मतलब मैं एक आपको फिगर वैसा बता दूं, इंडिया में जो वोट एलिजिबल वोटर्स हैं उसका 99% आर वोटर्स इन इंडिया। इवन अमेरिका हैज ओनली 73%। तो हम बहुत डीप रूटेड हमारा है, हमारे पास वही एक ताकत है। आई विल जस्ट टेक द फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट और फिर मैं मेरे कुछ और प्रश्न होंगे। देखिए, वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द ट्रस्ट इन इलेक्शन प्रोसेस। ये सालों से बात चल रही है कि कुछ गड़बड़ है इलेक्शन में। पहले था ईवीएम, फिर आया वीवीपैट, फिर आया रिसीट, फिर आया वोटर लिस्ट, फिर आया सम घोटाले इन वोटर लिस्ट। सो ये बातें 5-7 साल से चल रही है। हमने भी आवाज उठाई थी 3-4 साल पहले ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज ए टेक्निकल मैन कि भाई सॉफ्टवेयर कौन लिखता है, कहाँ है सॉफ्टवेयर, अपग्रेड कैसे किया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रोसेस में कहीं भी चोरी हो सकती है। ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। सो हमने भी ये बात पहले की थी, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद लोकूर कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सिविल सोसाइटी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अदर्स, लॉयर्स, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाया। उसमें बताया कि भी इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फेयर एंड फ्री। फिर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स लाइक प्राचा ऑल्सो रेज्ड हिज वॉइस, कोर्ट केसेस फाइल किए, ये किया वो किया। लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया तब तक वो हवा नहीं बनी। अब राहुल गांधी ने क्लियरली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चोरी कैसे होती है, कहां होती है, कौन करता है। और मैं तो कह रहा हूं ये एक पीस है, इट इज नॉट ए कंप्लीट पीस, क्योंकि राहुल गांधी ने तो खाली फोकस किया है वोटर लिस्ट पे, दूसरे सब एरियाज पे उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन उनकी बात से क्लियर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ डेफिनेटली है। अब हमारा काम क्या है? टू गिव वॉइस टू हिज वॉइस, एम्प्लीफाई हिज वॉइस एंड रिक्वेस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो हमारे संविधान में लिखा है कि एक वोट एक पर्सन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब चीजें वोट से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारा वोट आप चोरी कर लेते हैं तो हमसे आप हमारी डेमोक्रेसी चोरी कर लेते हैं, संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं। सो हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना वॉइस अभी ऐड करिए। पॉलिटिकल बॉसेस शुड ऐड,
ये खाली राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। अभी तो क्या हो रहा है कि राहुल गांधी इज ए लोन वॉइस और सब टूट पड़ते उन पे। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, इसमें सबको जुड़ना है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटीज, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस एंड स्पेशली यंग पीपल, कि उनका भविष्य चोरी हो रहा है। सो ये एक वॉइस से नहीं बनेगा, इसके लिए तो बहुत सारी आवाजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, और ये सबसे बड़ा काम है अभी। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं भाई साहब, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इवन द करंट पोजीशन ऑफ मिस्टर मोदी, मोदी जी की जो प्रधानमंत्री का पद है, वो भी अब ऐसा लगता है कि वो वैध नहीं है। वैध जब मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये अगर वोट चोरी करके आप यहाँ पे आप आए हैं, तो यस, पीपल हैव डाउट्स इन देयर माइंड कि अगर फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो शायद मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। और उन्होंने इसको एक तरह से एक प्लान करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप वहां पहुंचे। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, बिकॉज दैट मेक्स, और वो लग भी रहा है, मोदी जी का जो कंट्रोल होता था, यू कैन सी इट इज, ही इज लूजिंग दैट कंट्रोल, ही इज लूजिंग हिज फोकस। वो मालूम नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं आई विल जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल रिमार्क ऑन दैट। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर एट क्रॉस रोड्स इन इंडिया। अगले 10 साल में और 12 साल में हमारी डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड। देयर इज फियर in the society that ED will come and police will come and this will happen and that will happen. There is hate propagated between communities. Religion has been given too much of an importance. When I see Prime Minister spending a lot of time on Aarti and Puja and all that, it bothers me as a person. Okay, that's not Prime Minister's job. Okay, fine. At a personal level, I have no issue. Okay, but he's everybody's Prime Minister, and he can't take sides. So I have seen erosion of autonomy. I have seen erosion of values, Indian values, and it bothers me. Institutions are captured, whether it is judiciary, election commission, based on the conversation we are having, or universities are captured. So everywhere you see today hijacking going on, and that bothers me. Okay, I mean, I know that in some universities you cannot even give a talk because they will not allow free and fair conversation without. मैं एक चीज और आपसे करना चाहूँ, बिकॉज वी आर वेरी कंसर्न अबाउट वन मोर थिंग। the present leadership doesn't seem कि they are clueless about the whole thing, and we have a past thing that राहुल गांधी की जो फैमिली है उसमें 2 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। वी ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री कि हरेन पांड्या जो इनके इंपॉर्टेंट आदमी थे, उनकी हत्या होती है और आज तक अनसॉल्व है। No, we are also worried about the security of the Rahul Gandhi, because एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं सीआरपीएफ की, ये राहुल गांधी तो नहीं है, इज वेरी कैजुअल। मैं इस पे एक आपका, क्योंकि दैट इज समथिंग which is bothering lot of Indian people, मैं इस पे आपकी I want a remark on that. See, political violence has become a global issue. यहां भी देखिए क्या हुआ recently. कोटा में, yeah. Because when you promote hate, when you divide societies based on race, religion, caste, whatever, you increase tension. And in a tense environment, all you need is 1 or 2 crazy minds who take to violence. So I am very concerned about security of
all our political leaders. Rahul Gandhi for sure. I know when Rajiv Gandhi was blown out, we were all concerned about his security. We used to tell him as friends, don't be too close to public all the time. But when you are in that position, you feel connected with people. You want to break security and shake hands. And you want to feel normal. In the process, people get killed. Bobby Kennedy got killed here when I was young, and we were watching on TV while he was being shot. So this is a global concern. I am very concerned about Rahul Gandhi's security. Yes, yes. And one more, मतलब इसको कोई बोलता नहीं है वैसा, because हम लोग एक even Rajiv Gandhi for that matter, उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया था वीपी सिंह ने, which we all know, but it is not discussed. सेम वे राहुल गांधी की सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया है इस सरकार ने. पीपल डोंट रियलाइज दैट कि राहुल गांधी के ऊपर एक नेशनल थ्रेट है. ब्लैक कैट कमांडो बहुत से लोगों को दिए गए हैं, राहुल गांधी को नहीं दिया गया. ही इज अंडर अ सीआरपीएफ हु आर नॉट ट्रेन्ड फॉर सच सिक्योरिटीज. खैर, मैं एक चीज मैं सब और कहूंगा, क्योंकि वो मैं थोड़ा चाहता था कि आपसे उस पर बात कर लेते, और वो है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश ने राजीव गांधी को वो स्थान और वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उन्होंने देश को देना चाहिए था. और आई स्टिल रिमेंबर, मैं इसलिए अपने बहुत से दोस्तों से मैंने कहा, जब मैं वापस आया, आपसे मिला था मैं शिकागो में, मुझे बहुत कम 1 या 2 लोग जीवन में मिले हैं. आज राजीव गांधी नहीं है. यू हैड ऑल दी थिंग टू से. यू वर द ओनली वन हु सेड कि भाई व्हाट आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ राजीव गांधी. बिकॉज मेरे जैसे इंजीनियर एक 10,000 थे अमेरिका में, बट ही हैड द ट्रस्ट इन मी एंड देन वी डिड वंडर्स. और आप कहाँ चाइना था और कहाँ आप थे, मैं उस पर आई विल जस्ट लाइक यू टू कि राजीव गांधी को एक अगर टर्म और मिल जाता तो शायद इंडिया की डेस्टिनी कहीं और होती. मैं इस पे थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे. देखिए, मैंने आपको बताया था जब यहाँ आप आए थे घर पे कि राजीव गांधी gave meaning to my life. I was an engineer. I would have made money. I would have been a billionaire. But that life probably would have been empty. It would have helped my family a lot. But he gave me a chance to live a very rich life. Gave me a big canvas to paint. I could connect India. I could help in bringing IT revolution and telecom revolution and train millions and millions of engineers and build new institutions. It was very romantic. It was like being on drug. You are high all the time in building a nation. Nation building is very complicated compared to company building. It's very challenging, very romantic. So Rajiv Gandhi gave an opportunity not only to change telecom and IT, but also things like vaccine. Then we did not produce any vaccine. Today we are the largest producer of vaccine in the world because Rajiv Gandhi encouraged us to set up a first vaccine factory for polio vaccine. Production of oil seeds, mustard oil, moving away from traditional oil seeds into other areas was Rajiv Gandhi's initiative as a technology mission on oil seeds. Today we are the largest producer of milk. Rajiv Gandhi said to Kurian and I, why don't you two work together to make sure that India is the largest producer of milk? And we work together as friends and partners and colleagues. So Rajiv Gandhi planted lots and lots of seeds for supercomputer, at DRDO, in space. Nobody understands these things. They think everything got done in Modi's tenure. People have no idea that these things require planting seeds 30 years ago. You may see the fruits at some other time, which is great. I'm glad we are getting fruits today. And I'm glad somebody is getting credit. I have no issue with that. But let us recognize
how seeds were planted, where seeds were planted, who planted the seeds, and what it took to nurture those seeds. So if Rajiv Gandhi would have been alive for 5 or 10 more years, India would have been as advanced as China. I'm telling you. You gave me that figure. Yeah, you gave me that figure. C dot and I were at par, and at that point of time. Oh yeah. CDOS was far ahead of Huawei or anybody. Huawei didn't even exist then. Okay. We were far ahead of many people on supercomputers. We are far ahead on many things. We were doing local production, which we killed. Okay. So Rajiv Gandhi was in tune with modernization, technology, liberalization, new management philosophy, encouraging young, focusing on education. So I think all of those things mattered to Rajiv Gandhi. And Rajiv Gandhi was taken away from us too soon. And it is unfortunate. मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यू हैव आई मीन थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम, पर एक मेरा क्वेश्चन हरदम रहेगा, जब आप लोग आए एंड देन द इंडिया स्टार्टेड लिबरलाइजिंग एंड इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, और एक लग रहा है कि एक पूरा सर्किल पूरा हो रहा है, ऑल दी कंट्रीज वो बहुत ही अपना सोच रही हैं, मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ देयर नेशनलिज्म, देयर ओन थिंग, पीपल आर कमिंग, आई मीन दे फील कि समवन, ये कहीं रुकेगा और इट इज गोइंग टू, where is the problem, where, क्योंकि we cannot live without you, without America, we cannot live, America cannot live without us, we cannot, I mean it's a global thing. ये क्या हो रहा है इस समय? ये बहुत बड़ा प्रश्न है. It may require 1 hour of conversation at some point in time, लेकिन let me try to be brief. First ये समझना है कि for the first time in the human history we are all connected. Never happened before. All 8 billion people are essentially connected to each other. What does this connectivity mean to human civilization? Is the question we need to ask. In the process, local has become global and global has become local. You can see everything everywhere. You can be a little kid in Bihar and come to Guggenheim Museum, see Picasso in Chicago. Okay. In addition, now with AI, you don't only get information, but you get knowledge. There is a big difference. Internet gave you information. It gave you an article you could scan. But now AI gives you knowledge. It reads for you. It summarizes for you. It synthesizes for you. So now we have a completely different world. In this new world, some people are threatened. People are threatened because they can no longer control. So the old mindset of command and control is being threatened by collaboration, cooperation, communication, and co-creation. So those who were used to command and control feel that I'm losing my position. In the process, social media has really empowered everybody. Some right, some wrong. People feel they have opinion on everything all the time that the world needs to know, and they know all the answers, which is not true, but they feel that way. Yes. So now you have a whole bunch of people who feel that they are not being heard. They are not part of the system. And inequality has increased in terms of economic activity. Power is centralized, inequality has increased, but tools
are designed to empower everybody. And so people feel frustrated that I'm empowered, but I can't do anything. So you have a rise of authoritarian regime. To me, this is a knee-jerk reaction to end of decolonization. Finally, it is coming to senses to large number of people that world is no longer colonized. Everybody is empowered and they all want piece of the pie. So they are afraid of migration. They are afraid of global talent, and they want to build borders around them, saying, I want to be rich. I don't want you to be rich. Okay. I'm not going to allow you to come in. Okay, because you will steal something from me. You will take something away from me. Okay. So I think this whole idea of nation state, which is really new, 200-year-old. 200 years ago, you didn't need a visa to go anywhere. When Britisher says we gave sense to India because India was really not a nation. India had no borders. Afghanistan, Burma, it was all India. Yes. It was a civilization. Okay. So this idea of border is going to last for a while. But in that idea of border, there are borderless people. Because you work from home, you live in Chicago, your interest is in India, you are doing an assignment with Europeans and you are getting paid by Brazilians, perhaps. Okay. Yes. So you have become digital citizen, but with a border. So this idea of border is also going to be challenged. See, we have human rights defined for an average citizen, but we do not have human rights for digital citizen. What are the human rights of a digital citizen? We don't know. We don't understand that. Okay. A digital citizen, you are resident of what? Where do you pay tax? Okay. So we are going through a very difficult time, and AI is going to further complicate it. I think it will settle over a period of time. It may take 20 years, it may take 50 years. Okay. But we are going to see more prosperity. We still think of economy of scarcity, but we live in an economy of abundance. So there is no need to fight with the neighbor for resources. There is enough for everybody. But we are fighting with neighbors for resources. If you are going to run out of oil, there will be another energy source. There will be fusion technology available to everybody. Okay. So I think we must recognize that we are living in an era of abundance. There is enough food for 8 billion people. And there will be enough food for 10 billion people. Also. Okay. So don't worry about food. Don't worry about shelter. Don't worry about oil. Okay. Don't fight for resources anymore. So we have an old mindset. I was just talking to somebody earlier and I said, look, India should first focus on our neighborhood. Being such a powerful, large country, how can we have all our neighbors in difficult times? Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. What is Afghanistan? Myanmar. Yeah, what is this? Okay. Why can't we bring all our neighbors together and we all live in peace and harmony? There is enough for everybody. Okay. Why are we still living with the old mindset? Of course, there will be problem. Of course, there will be terror. Of course, there will be some problems, but we got to deal with it. Okay. But today, the situation is such that we are all isolated. Each one is for themselves. So on one hand, you have a technology of connectivity, but we are disconnected. Yes. मतलब एक दिन I must tell मेरे अपने दर्शकों से मैं वादा करता हूं कि आपसे केवल AI पे एक दिन हम चर्चा करना है, क्योंकि AI is something
जो it is on the user how good he uses that AI. Otherwise, वो or it is going to affect the leadership, the political, the social, the economy, everything of that. We will just have a session only on that. Thank you so much, Bhai Sahab. I mean, it was last month or month before, I gave a talk in Dominican Republic. I gave a keynote speech on AI to Latin America.